नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। वीक 3 सितंबर 2021। मैं हूं विजय सिम्हा। आज आनंद इस वीडियो पर नहीं आ पा रहे हैं। निफ्टी has been rallying consistently and it has achieved the targets that Anand and I have been sharing over the last few months. मैं बार बार कहा था कि 17,200 से लेके 17,400 के निफ्टी टारगेट्स हैं जो पॉसिबल है। Yes, a couple of months were really testing us. जितनी जल्दी मैंने सोचा था हम 17,200 या 17,400 पहुंचेंगे, उतनी जल्दी नहीं पहुंचे। It took a couple of months more. So सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अब क्या। So let's go to the charts. यह है निफ्टी का डेली चार्ट। जैसे आप देख सकते हैं, मार्च 2020 कोरोना बॉटम से ये रैली कर रहा था नॉन स्टॉप एंड इसी राइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर था टिल अप्रैल 2021। अप्रैल के बाद से इट ब्रोक डाउन एंड आप देखोगे कि इसने एक बार यहाँ ट्राई किया था इस चैनल के अंदर वापस जाने के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, एंड ऑफ अप्रैल, एंड उसके बाद दूसरी बार यहाँ मई 2021। May, June, it managed to stay within the channel, but again it fell out of it and ये पूरा flat action था जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था आई थिंक, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। आई थिंक जो ऑप्शन सेलिंग में उनके लिए तो ये मौज का टाइम होगा, स्टार्टिंग 15th of June till 28th of July, more than a month, एंड फिर से रैली कर गया। बट अगेन इफ यू सी उसी चैनल बॉटम पे ये रेसिस्ट कर रहा है एंड 1, 2, 3 ये 4 दिन यहाँ इसने गुजार दिया। और अगर एलियट वेव की बात करें तो क्लियरली लुक्स लाइक 1, 2, 3 the entire action was a complex correction WXY XZ एंड उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट इंपल्स खत्म लग रहा है। Right. So it does look like, even on a weekly scale, it looks like it's done more or less. अगर इस रेड कैंडल को रोमन 5 के अंदर की 2 माने और ये 3 और ये पूरा फ्लैट एक्शन 4, तो it's either done और मे बी थोड़ा सा 1-2 दिन का एक्शन शायद बचा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इंटरनल काउंट देखे तो हम जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि व्हाट इफ दिस वाज 1, 2, 3, 4, 5। तो एक इम्पल्स खत्म हुआ, ये करेक्टिव था एंड थर्ड के अंदर की 1, 2, 3, 4, 5 थर्ड ही खत्म हुआ है एंड दिस इज द एक्चुअल फोर्थ एंड मे बी वन मोर फिफ्थ। अब ये सब इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, करते ही रह सकते हैं, बट टू मी दिस इज टाइम फॉर कॉशन ऑन द इंडेक्स एंड हेंस द इंडेक्स कंपोनेंट्स। एक ऑल्टरनेटिव है जो बुलिश ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो ये है कि सपोज ये फिफ्थ के अंदर का 1 यहाँ खत्म हुआ है। इफ यू नोटिस आई पुट 1 ब्रैकेट हियर। सपोज ये पूरा एक इंपल्स था, यहाँ 1 खत्म हुआ एंड दिस एंटायर फ्लैट एक्शन इज ओनली 2 which is 2 bracket, then it is possible that we are in 3 bracket जो या तो यहाँ खत्म हो गया या ऊपर 2.6 टाइम्स तक एक्सटेंड करेगा
एंड वहां से फिर हम फोर्थ में डाउन आएंगे एंड देन वन मोर ब्रैकेट 5 विल अनफोल्ड. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. उसको जरूर हमें माइंड में रखना चाहिए क्योंकि बुल मार्केट में वेव्स बड़े भी होते हैं, वेव एक्सटेंशंस भी हो सकते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. बट प्योरली इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 2000 पॉइंट और जाएगा या नहीं जाएगा. प्योरली इफ यू लुक एट द नेक्स्ट वीक और टू, this is definitely time for caution. Clarity will emerge if this high of 17,436 is crossed, or if this low of 17,250 is broken. 254. So 17,250 नीचे के लेवल है और 17,440 लगा लो ऊपर के लेवल. ये रेंज डिफाइन करेगा हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. अब चलते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट में. ये जो बिग राउंड नंबर्स की मैं बात करता रहता हूँ बार बार कि निफ्टी मूव्स इन लेग्स ऑफ 3000 पॉइंट्स. सो द नेक्स्ट 3000 पॉइंट is at about 18,000, which is about 550 points away from the recent high of Nifty. एक और चीज है, अगर हम इसको 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल ना मानकर हम अगर ये एज्यूम करते हैं कि ये जो लेग 2009 से लेके 2020 जनवरी तक था, सपोज दिस इज the first impulse within wave 3 circle. Let's assume that wave 3 circle is a very big wave extending over a decade or so, or maybe more. तो क्या ये एक रोमन 1 और ये रोमन 2 था कोरोना बॉटम, एंड वी आर इन रोमन 3. That also explains this vertical rise because third waves are very powerful. अगर वो भी हम एज्यूम करें तो आप प्लीज इस चीज पे गौर करिए. मैंने एक फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया है. Assuming that this is wave 1 and if I were to put a wave extension, even then 17,400 is equal to this entire rise. मतलब हम 1.5 साल में उतना चल चुके हैं जितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साल लगे. This 11 years move has been equaled in about 1.5 years, less than 2 years. तो टाइम कम लगाया है बट प्राइस अचीव कर चुका है. सो दिस ऑल्सो टेल्स मी कि 2-3 चीजें कोइंसाइड हो रही हैं 17,400 लेवल पे. एक इसका वेव एक्सटेंशन, एंड जो हम दूसरा वेव एक्सटेंशन यूज करते हैं कि एज्यूमिंग कि ये वेव 1 और ये 2 है नीचे. सो वेव 5 और 1 की इक्वालिटी भी हम अगर देखते हैं तो अगर वेव 1 इतना लंबा था तो वेव 5 ऑलरेडी 1.38 टाइम्स ऑफ वेव 1 हो चुका है, which is again a good point where the market can pause. All of this coupled with this channel significance जो मैंने explain किया था, ड्राइविंग चैनल के बाहर प्राइस आ गया, it is trying to get back into it. And अगर ये थोड़ा और पुश कर लेता है तो 17,988, so which means this wave 5 is 1.6 times of wave 1. वहां तक भी जा सकते हैं, but that also lines up with the big round number 18,000, right? So looking at all these multiple indications, we should be very careful with our Nifty positions because we are more or less there. एक important confluence point पे हम आ गए. अगर कोई GAN theory वगैरह अगर follow करते हैं तो I'm sure those studies will also indicate some time cycle finishing here. So this is about Nifty, but
Let's also take a look at Bank Nifty just for a moment, because Bank Nifty has frustrated the most. ये लक्ष्मण रेखा जो मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ 34 to 85, ये ब्रीच नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे हुआ था, बट इट क्लाइंब बैक. तो अभी तक दिस काउंट लुक्स बुलिश श्योरली, राइट. 42,000 जो लेवल अचीव होना था वो आया नहीं. इनफैक्ट 40,000 भी हमने पार नहीं किया है सिंस 16th of February. So I kept wondering कि ऐसा क्यों हो रहा है, and this is something that I shared with Anand a couple of days back. So ये पिक्चर है, जिसमें मैंने आनंद को कहा था कि ये जो लेग था, वेव 2 होता तो अभी तक हमें ऊपर के इसके ऊपर चले जाना चाहिए था. This took 1 2 3 4 5 6 7 8 9 about 10 weeks of correction. बट अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 20 वीक्स बिता दिए हैं और अभी तक हमने ये हाई क्लियर नहीं किया. So what I'm trying to tell you is this rise has taken double the time of this fall. This kind of behavior is not of bullish nature, right? टाइम इतना नहीं लगना चाहिए उतने प्राइस को कवर करने. तो इसलिए मुझे लगा कि what if this entire leg was just A of a correction and maybe this whole thing is B of correction, right? So A B, तो हो सकता है कि there is a C leg in Bank Nifty pending which can probably come back to this level, या हो सकता है कि यहाँ तक ना आए, maybe becomes a complex correction जो बहुत टाइम वेस्ट करेगा कुछ और महीने और हम यही घूमते रहेंगे ऐसे 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 ऐसे. This is another possibility. Also notice this rising channel, right? यहाँ कन्विंसिंग ब्रेकआउट जरूर हुआ था बट नीचे आ गए हम. उसके बाद we've been under that rising line and अभी तक हम वो लाइन पार नहीं कर पाए, राइट. जैसे निफ्टी में हम चैनल के नीचे आ गए थे एंड वी आर अनेबल टू गेट बैक इनटू द चैनल, बट बैंक निफ्टी में वी आर विद इन द चैनल बट इस चैनल के ऊपर नहीं जा पा रहे. सो दिस आल्सो इज समहाउ गिविंग मी एन इंडिकेशन दैट मे बी बैंक्स आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट मोर टाइम. व्हेन आई एम सेइंग बैंक्स आई मीन जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बैंक्स. तो अब देखते हैं एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक्स की चार्ट. अभी तक बुलिश काउंट बरकरार है इसमें. दिस इज अ वीकली चार्ट एंड दिस पिंक डॉटेड लाइन इज द हाई वॉल्यूम. सो बहुत डिप्स आए थे फरवरी. अभी तक हमने वो क्लियर नहीं किया है. यहाँ ब्रेकडाउन जरूर हुआ था एक बार बट वी केम बैक इनटू दिस जोन एंड इफ यू सी इसके लो पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. नाइस डोजी, राइट. इट आल्सो कोइंसाइड्स विद 40 week moving average, all of that. तो अभी तक bullish nature is intact, but it has to show us the proof in price action very quickly, right? So ये internal count है, daily count, daily candles हैं 1 2 3 4 ABC. It looks like this is one wave up, and we are in wave 2 down. या तो यहाँ खत्म हो गया या थोड़ा और टाइम वेस्ट करेगा, बट इसका कंफर्मेशन तब मिलेगा जब इस हाई के ऊपर जाएंगे, which is 2393 approximately. So it is possible that Bank Nifty may not perform much, but PSU banking space performs. क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे तो सरकारी बैंक्स का वेटेज इतना हाई नहीं है जितना प्राइवेट बैंक्स का है. Then let's look at the broader indices. Nifty Midcap. ये इसका मंथली चार्ट है, राइट. नॉन स्टॉप रैली अगेन. इतना रैली जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सालों का रैली जो है उसको हमने 1.5 साल में
equal कर दिया है, right? So we are bull market, but we've come a long way. ये weekly chart है Midcap 100 का 1 2 3. This was probably 4, and हम इसकी 5th में है. Will it go all the way to 31,000? Possible है, but we are in the 5th wave, which is the final leg. So again, there's a possibility कि थोड़ा market ठंडा हो जाए 2-3 महीनों के लिए. Let's look at small cap. Small cap 100. Again, non-stop rally except this one big candle. If we go to the weekly scale, again यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि 1 2 3 and this was 4 and we are in the 5th. Daily chart पे जाएंगे तो हम इंटरनली 5 waves complete भी count कर सकते हैं, but हो सकता है ये थोड़ा सा और push करें. Again, just like the mid cap 100, small cap 100 also is nearing the end of one impulse wave. So it can correct back to the 40-week moving average whenever the rally is done. So again, time to be cautious. Let's look at Nifty 500. Again, big round number 15,000. It is about to reach that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहीं पे रुक जाना चाहिए. Sometimes it does push above it for a while. ये देखिए यहाँ पे दिखता है, यहाँ पर भी दिखता है आपको 200-300 पॉइंट ऊपर पुश कर सकता है, but it eventually comes back because for some reason these big round numbers are psychological barriers probably for the market. तो ये 15,000 के आसपास हैं, तो again time to be careful. So that's it from me for now. Our indices हम देख सकते हैं, but I thought let's look at the indices that matter most to Nifty, because Nifty can cool down while other sub indices like pharma, PSU banks, or Nifty PSC or Nifty Realty, those things can continue to perform. In fact, Nifty Realty पे एक नजर, right? एक वीडियो भी बनाया था मैंने इसके बारे में कुछ 2-3 महीने पहले, I think. So it is broken above this level after many years, right? ये वीकली स्केल पे लगता है कि इसमें एक इम्पल्स यहाँ खत्म किया है, ये शायद वेव 2 यहाँ खत्म हो गया है, और maybe this is an irregular flat A, B, and maybe C will come down. So we'll have to wait and watch. So time to be careful on Nifty as well as Bank Nifty. Please watch the levels that are defined for everyone, and go long or go short only when those key levels break. Hope this video has given you guys some perspective as to what can happen in September. Please respect risk, have stop losses, and see you on the next video, guys. Thank you. Please do leave comments under this video. Bye.